हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ व्यू टू मार्केट्स। चलिए आज का प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। बहुत ही बड़ा गैप डाउन मार्केट ने किया, राइट? ऑलमोस्ट लाइक गुड अमाउंट 600 सम ऑट पॉइंट्स, राइट? एंड जिस तरह से हमने सेंसेक्स में बात की थी, एक हमारा जो फेक ब्रेकडाउन है वो हमारा शायद तब्दील होता हुआ नज़र आए, और हम उसके ऊपर भी अभी आएंगे कि किस तरह की एक्सपायरी हमारी लग रही है। बट सेंसेक्स में आने से पहले एक बारी हम इसकी बात करते हैं निफ्टी में हमने कहा था कि हम 590 के ऊपर एक बुलिश एक्सपेक्टेशन रखेंगे। बट देखिए, जब मार्केट ऑलरेडी इतनी गैप अप खुल जाए, राइट, सो देयर इज़ नॉट मच स्कोप टू गो अप, राइट? And so in general, in that situation, it's best to just watch the market for at least some time, and then see what is the price action the market is making, and then take one or two runs and just get out of the market as quickly as possible, right? So before I discuss further things, I just want to tell you that आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर भी देखा होगा आपने कि जब भी कोई एक आपका कॉलीग या कोई अदर बॉस आपका कोई प्रेजेंटेशन फिनिश करता है, राइट? वो कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वो लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? आप लोग सारे बैठे हैं, एंड everyone claps at the end of the presentation, right? इट इज़ जस्ट नेचुरल, वो नेचुरली वहाँ निकलता है। बट इंडिया में क्या होता है, वी डोंट ऑलवेज डू दैट, राइट? वी अप्रिशिएट साइलेंटली, हम उसको साइलेंटली देखते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, बट हम लोग ना जताते नहीं हैं। So you are actually liking these videos. I'm sure you're getting the content, and I see the views are also increasing now, right? So the only way I know you have appreciated and have at least taken some learnings since the time we have been connected. So I would really appreciate if that one like button, right? If you click on that one like button, and that will be your clap for me, right? At the end of this presentation that we do, right? That's all I'm asking. So please do consider liking, and just put any comments you have, and that's all I'm asking for. So let's move forward, right? So see, when such a gap up happens, right, it's always best to see the market for some time and then take a price action. See, if you saw today, we had विक्स जो था हमारा ऑलमोस्ट लाइक गिरा है। अगर हम जल्दी से विक्स की फिगर देखें, सो विक्स गिरा है और हमारे प्रीमियम्स भी अब थोड़े नीचे आने लगे हैं। 10% के करीब हमारा विक्स गिरा है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 25 at 25 levels now. So that's a good sign, right? It's coming down. The premiums are also uh, kind of not inflated the way they were at 28, 29 levels, but they're still inflated, I would say, राइट? और वो हैं भी अभी, राइट? क्योंकि जितने लोगों पे ऊपर के लेवल्स पे हाई प्रीमियम पे राइट किए हुए थे, तो उनका जो अभी ब्रेक इवन है, वो अब थोड़ा सा नज़दीक आना शुरू हो जाएगा, राइट? तो देखिए, हम यहाँ पर किस तरीके से निफ्टी को देख रहे हैं, और हम इसके बाद हम सेंसेक्स को देखेंगे। देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा जो व्यू है वो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट मे कम टू दीज लेवल्स टुमारो, राइट? अगर वो सुबह ही इन लेवल्स पे आती है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताती है, हम एक शार्प अप मूव देख रहे हैं, राइट? शार्प अप मूव अराउंड मे बी बिफोर 1 o'clock, I would say, right? And then we are expecting a consolidation at these levels, राइट? सो हम ये शायद ये मूवमेंट सुबह ही कंप्लीट कर लें, राइट? हम ये सुबह यहाँ पे तीन चार कैंडल यहाँ पे करके करके, एंड देन वी कैन जस्ट गो अप। आई एम एक्सपेक्टिंग अ शार्प मूव हेयर टुमारो, right? If this does not come, right, I'm just not going to take any trade. I will just go silently sit for my position here. और अगर कुछ यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, then I'm going to take at least for this level, right? At least for these levels, I will say, which is 22,890, 890 or 22,880 levels, right? 22,880 levels, something like that. So tomorrow is expiry of Sensex, right? And हम इसमें नीचे की तरफ नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो इस तरह से व्यू है, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था, आई जस्ट क्विकली गो एंड शो यू हाउ द चार्ट वाज लुकिंग ऑन अ डेली कैंडल, राइट? ये हमारी डेली थी, राइट? हमने यहाँ पे आज सपोर्ट लिया, ये हमारे कल की डेली कैंडल थी, और ये जो हमने लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, ये देखिए यहाँ पर, ये वाली देखिए,
तो इसके ऊपर ही मार्केट ने आज एक गैप अप किया, व्हिच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई वुड से, बट ये हमारी बेयरिश बनी है, ऊपर खुल के नीचे आई है। I would still consider this a candle as a bullish, not a bearish as of now, till the time we go below these levels. But इसको मैं एक तरह से bullish candle की तरह ही देखूंगा, right? The thing is that we are expecting this, retracement to go to a certain level, राइट? तो अगर हमारा ये यहाँ पर जो ये चैनल बना है, राइट, वी माइट एक्सपेक्ट this gap to come here, and then probably we may break this channel, maybe not tomorrow, but if we break, then it's well and good, but that will not be in our trading zone in a way, right? We more will be interested in getting around these levels, right? And that's one. Now, if we just go and watch the Sensex level that we had, that we had discussed yesterday, right? This is on the 15-minute chart, right? So see, we had spoken about a candle which may form a अगर आप इसको वीकली कैंडल पे देखेंगे, राइट, सो ये ऑलमोस्ट हमारा एक फेक ब्रेकडाउन कर रही है। अगर आप देखेंगे, ये हमारी पिछले वीक की कैंडल है, और ये हमारी करंट वीक की कैंडल ऑलमोस्ट ये बन चुकी है इतनी, राइट? एंड वी वर गेटिंग दिस लाइन, इफ वी सी दिस लाइन दैट वाज कमिंग, ये हमारी लाइन इधर है, तो ये ऑलमोस्ट लाइक हमारी कैंडल बन चुकी है, उसके ऊपर ही आ गई है, क्लोज हुआ है आज। तो अगर हम इसको देखते हैं इस नज़रिए से कि आगे आने वाले टाइम में हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं, तो लेट्स मूव टू 15-minute टाइम फ्रेम एंड सी हाउ द कॉल राइटर्स हु हैड रिटन द कॉल्स एट दीज लेवल्स हैड डिफेंडेड देयर पोजीशंस। वो जैसे ही ये ऊपर गैप अप हुई आज, राइट, ये भी ऑलमोस्ट लाइक 1800 पॉइंट्स गैप अप थी। अगर आपने देखा होगा, ये आज ऑलमोस्ट निफ्टी, अब जो हमारा सेंसेक्स है वो 1800 पॉइंट्स अप था, राइट? और हम जिस तरह से बात कर रहे थे अराउंड 2900 पॉइंट्स दैट वी मे हैव टू कवर, सो ये 1800 तो ऑलमोस्ट आज ही आ गया, राइट? ऑलमोस्ट अब हमने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया है ज़रूर, राइट? बट इफ़ यू सी दैट लाइन वेयर इट इज़ टचिंग हेयर, तो वो अब हमारा ऑलमोस्ट लाइक 1000 हमारा पॉइंट्स रह गया। अगर हम इस पॉइंट से देखें, ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से देखें, अभी भी है हमारा 1300-1400 पॉइंट्स, राइट? So see, today the defensive play that the call writers did at was at these levels, right? वो पहले यहीं पे उनको लाके यहीं पे उन्होंने maybe they have gotten out of their positions. We'll have to see the price action tomorrow and how the OI is behaving, the open interest is behaving tomorrow, right? So see, the view is tomorrow on Sensex is that we again might consolidate at these levels and may touch these trend line again, right? The trend line, ये हमारी वही ट्रेंड लाइन है जो हमारे डेली कैंडल पे हमने सपोर्ट लेके हमने उसको फेक ब्रेकडाउन दिया था यहाँ पर, राइट? तो there might be a situation that we might come near this candle tomorrow, right, on these candles, and take a support, and then take a sharp rise at, to come at these levels once again, right, around these levels once again, right? So this is something which is on yesterday's basis, the position that was forming in, जो हमारी कल की पोजीशन हमारी बन रही थी ओआई की। अगर हम इसको आज के नज़रिए से देखें, राइट, अगर हम आज की किस तरह से पोजीशंस बन रही हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेके चलूँ, राइट, अगर हम इसको यहाँ पर लेके चलें और देखें, राइट, कि यहाँ पे किस तरीके से बन रही है, सो दिस इज़ द व्यू दैट वी आर फॉर्मिंग हियर, राइट? So there has been a lot of calls selling at these levels, right? At these levels, if you see, and there is one small level here itself, and there is put writing at these levels, if you see, right, here and here and here. This is the trend line that actually we broke. Fake breakdown again. I'm just telling you, this is a different chart. So here, if you see, right, we have a good call writing at these levels, and these call writers are actually, put writers. So these put writers are actually operating below these levels right now, right? So technically they are in losses at this point in time, right? So the thing is that because this put writing is significant, so I'm sure they will not let the market go like that, right? सो क्या होगा कि हम जिस तरह से बात कर रहे थे, हम शायद इन लेवल्स पे आएँ, राइट? मे बी इन लेवल्स पे आएँ,
सुबह ही धीरे धीरे धीरे, and then we may do a sharp movement till at these levels, and then we go sideways at these levels by the end of the day, right? So again, it comes out to be around some 73,900 levels, right? 73,900 levels, or 73, I would say, 983 levels, right? Somewhere around these levels. So you can also come at these levels. So that is a view for tomorrow, right? And if we just go and quickly check, if what if we go down, right? I'm not interested in the down trade tomorrow, right? My view is that we are in a position that the market actually had broken out and given the fake breakdown, and now we are actually going and recovering. Today what happened is यार यहाँ पे हम खुले तो ज़रूर, बट क्योंकि हमें उन्होंने देखा कि सब लोग यहाँ पे हमारा गैप अप हुआ है, तो सब लोगों ने यहाँ पे रिटेल ने बाय करना शुरू कर दिया, और उन्होंने उसको उनको आसानी से पैसे दिए नहीं, राइट? उनको दिए नहीं। अब वो कल यहाँ पे फिर उनको लेके जाएंगे नीचे लेवल्स तक, राइट? और नीचे लेवल्स तक लेके जाएंगे, और उसके बाद वो जब थक जाएंगे मे बी, यू नो, एंड देन दे मे जस्ट डू अ जंप from here. So this can be a position that I'm just biased towards one side tomorrow, right? Because I'm not sitting for any position downside, right? अगर नीचे जाती है, then let it go, right? I will sit for this view, and let's look at how the option chain is looking like right now, right? So looking at the option chain, right, we have a good amount of call writing. You see, you know, there is a big gap that has been created now. You know, the puts have written at 72,000, the calls at 74,000, and then we have some significant writing which has happened at the both ends, right? So these guys are okay right now, right? And these guys are okay right now. So whatever is going to happen, it's going to happen between this area tomorrow, right? This area, right? Because VIX was high, right? So the lot of call options have been written at higher premiums. So if we get a kind of a VIX to fall, right, then then the premiums might fall by a certain value, right? That can only be told once you're in the market tomorrow, और जिस तरीके से हम उसको देखेंगे, then we will see, you know, how VIX is behaving, किस तरह से प्रीमियम घट रहे हैं, then you know, और किस तरह से हमारा open interest react कर रहा है, right? And by that logic we will sit for the trade. But as I so that will be the view for tomorrow, right? Please share this video, subscribe, and consider liking the like button. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.